हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला जानेंगे, उसे प्रूफ करके देखेंगे क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ दो कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किया गया है, कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक लाइन लिया गया है और यहाँ पे एक पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ है, पॉइंट बी उसका कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 दिया हुआ है। लेट P whose coordinates is x and y be the point which divides AB into in the ratio m is to n. Here is point P whose coordinates is x and y, which divides line AB in the ratio of m is to n. Now draw AC perpendicular to OX, BD perpendicular to OX and PE perpendicular to OX. Here AC perpendicular to OX, BD perpendicular to OX and PE perpendicular to OX. Now again draw AL perpendicular to PE and PM perpendicular to BD. AL perpendicular to PE and PM perpendicular to BD. Okay, now CE equals to AL. CE equals to AL and CE is x minus x1. This is x1 and this is x. So CE is equals to EO minus CO equals to OE minus OC, which gives OE is x minus x1. AL equals to, in the same way, ED बराबर DO minus EO and DO is x2 minus EO is x. ED and ED equals to PM equals to x2 minus x. In the same way, PL equals to, this PL equals to PE minus LE and this LE is equals to AC and this AC is Y1. AC is Y1, which is equal to LE. This is also Y1. So P
equals to y and LE equals to y1. So PL equals to PE minus LE, which is equals to, and PE is y minus y1. Similarly, BM equals to BD minus MD. Here MD equals to PE and this PE is y, so MD is also y. MD is also y and BD is y2, so BM equals to y2 minus y. BM equals to y2 minus y. Now in triangle APL, and triangle PBM, angle ALP बराबर angle PMB, each 90 degree. Now angle APL equals to angle PBM, each equals to corresponding angle. Now as we know that when two triangles are similar, then their sides are proportional. By AA similarity, triangle APL similar triangle PBM. Now AP by PB equal to PL by BM equal to AL by PM. Now our AP by PB is AP by PB. This one AP by PB equals to M is to N, and PL, here is PL, which is equals to y minus y1, and BM which is equals to y2 minus y, and this is AL. AL is this one AL, which is x minus x1, and PM, this one is PM, which is x2 minus x. Now we just solve this and section formula proof हो जाएगा. First take this, m by n equals to y minus y1 by y2 minus y. इसको इस तरफ गुना करेंगे and n को इस तरफ गुना करेंगे. m y2 minus m y equals to n y minus n y1. तो m y2 ये इस तरफ आ जाएगा प्लस n y1, ये n y, ये जो m y इस तरफ आकर के प्लस m y हो जाएगा. दोनों में y कॉमन है, y निकाल लेते हैं, m प्लस n बचेगा. इस तरफ m y2 प्लस n y1 रह जाएगा. सो तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, दिस वन m y2 प्लस n y1 y m plus n. Similarly we get the value of x, which is like this, x minus x1 by x2 minus x equals to m by n. Here
नाउ दिस, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, nx माइनस nx1 बराबर mx2, ये इस तरफ आ जाएगा माइनस mx। उसी तरह nx, ये mx माइनस में है, इस तरफ आकर के प्लस में हो जाएगा बराबर के mx2, ये माइनस nx1 है, ये इस तरफ आके nx1 प्लस में हो जाएगा। x दोनों में कॉमन ले लेते हैं और mx2 प्लस nx1, तो x बराबर क्या हो गया, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। यही हमारा x कोऑर्डिनेट है और यही हमारा y कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट P का। यही है सेक्शन फॉर्मूला। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्री एजुकेशन सेंटर। थैंक यू।